Thank you very much. I am going to discuss about the multiplication for class 3. So here I am, the title of the lecture is multiplication general topic. But first I will discuss the warm up just to remind the student what they have done in class 2. This is the topic. The first point is the symbol of multiplication, the symbol of multiplication is double X, capital X cross. Generally it is referred as class. Further, again I am writing the of word of and times along with into are also used for multiplication. These are the basic things which I have already discussed in the class 1 math and as well as class 2 math. The third point, group. It is very common. Group means how many groups are for a student of class 3. But in one group, there can be more than one object or item, like पेंसिल जो बच्चों के है, बुक, देन मैंगो, एनी शेप, सर्किल, etc. So group is defined as one block consisting of so many items. For example, suppose one student got 5 mango. So 5 will be objects in one group. Item. Now just say 4A formula for multiplication. Formula for multiplication. It needs bigger space, so I am here. Formula for multiplication, I am just here writing. Suppose formula is multiplicand into multiplier is equal to product.
be careful that here if it is into, so into can be sometimes written as of, sometimes times, and sometimes into. I have written in the bracket. So it should be very much clear in their mind. First, multiplicate is the first term. This is the second term, and this is the third term. Very clearly, first term is the multiplicand, second term is the multiplier, and finally the product. Now, I am explaining one very simple thing. Suppose 5 into 6 is equal to 30. This is the, so 5 is the first term, 6 is the second term, and 30 is the third term. So here I want to just explain what is the meaning of group, what is the meaning of item, then total number of the objects. Suppose, here I am giving the example, suppose we have 30 mango. This 30 mango becomes total number of object. Number of objects. But we want to distribute in a 6 group. That means 6 students are there. So here condition I am putting, this is the first point, to make a distinction between the total number of objects. Second point is, we have 6 students तो ये हो जाएगा 6 ग्रुप. We have 6 students to distribute equally मैंगो. जनरली घर में झगड़ा हो जाता है तो टोटल 30 मैंगो है, आपके जो है क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, नहीं 30 स्टूडेंट, 30 मैंगो है और 6 स्टूडेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कैसे हो जाएगा अब देखिए. सेकेंड ग्रुप इज रिफर्ड एज ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा. दैट मीन्स मल्टीप्लायर इज ए ग्रुप. Very clear, multiplier is a group, and this is a total number of object. Total number of object. There is no difference. Objects. Here bracket में I am writing mango. और mango कितने हैं? 30 है. Confusion एकदम नहीं होना चाहिए. Product है, product को थर्ड टर्म है, a total number of objects यहीं पे लिखना है. राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. अब देखिए अब कितने बांटे जाएंगे. ओबियसली है, आप या तो 6 का टेबल पढ़िए तो 6 5 जा 30. तो यहां पर आपका आ जाएगा दिस इज द टोटल नंबर ऑफ objects in one group. One group मतलब one student.
सो अब ये होगा कि 5 मैंगो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच स्टूडेंट्स। तो ग्रुप ये हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप, वन ग्रुप ये हो गया, और टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स ये हो गया जो है। अब देखिए इसको सिंबल वाइज कैसे करेंगे, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं जो है। आई एम जस्ट गिविंग यू द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। दिस इज मल्टीप्लिकेंट into multiplier is equal to product. It is a formula for multiplication, but B point is multiplication fact. 4B, फोर बी, 4B, multiplication fact, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमने कहा है 5 into 6 is equal to 30. आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, चलिए एक बार कर देते हैं। ये आपका जो है मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लिकेंट, ये आपका जो है मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर, और ये आपका प्रोडक्ट है। अब देखिए, इफ यू आर एडिंग 5 6 टाइम्स, 6 बार, और सम करेंगे तो वो 30 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5 + 6 is equal to 30. अब ये 5 इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप को ये भी मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप, और 30 हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज ए ग्रुप, और इसको नीचे ग्रुप लिख दिया आप आसानी के लिए। फर्स्ट ग्रुप, यहां पर ग्रुप लिख दीजिए, यहां पर ग्रुप लिख दीजिए, यहां पर ग्रुप लिख दीजिए, यहां पर भी ग्रुप लिख दीजिए, और यहां पर भी ग्रुप लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब जो है, ग्रुप जो है मल्टीप्लायर हो जाएगा, ग्रुप मल्टीप्लायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, आइटम कह लीजिए, सेम थिंग। अब देखिए फिर फिफ्थ पॉइंट विच आई एम गोइंग टू सजेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स and responsibility of the teacher and parents, that the table, mathematical table, tables should be remembered, by a student from 0 to 10. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये याद नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते किसी भी हालत में। दूसरा, छठवां, 6, एनी नंबर if multiplied
multiplied by 0. So the product is always 0. Seven, any number if multiplied by 1, so the product is the same number. That is very very important. अब देखिए, अब क्वेश्चन कम्स कि हाउ विल टेस्ट द स्टूडेंट्स whether they know the table from 0 to 10 or not. I will give another example as well as the question. 8. Fill up, ask the students to fill up the box. A, 0 into 9 is equal to what? Second, 9 into 0 is equal to what? 3 into what should be 24. 9 into what should be 81. B. 8 into what should be 8. 7 into 7 will be what? 7 into what will be 56? 9 into what will be 9? So, if a students are clearly fill up, the teacher should understand that he know the table from 0 to 10. And the things I am giving you, 9, circle with different color of tables 4 and 7. थोड़ा ये मोर कंफ्यूजिंग है, जिससे कि आपको श्योर हो जाएगा कि लड़के जो जरूर जानते हैं टेबल्स। अब मैं बना रहा हूं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I always recommend to teachers ask the students to use pen and copy to draw such type of the table, because they should know what is the horizontal line, what is the vertical line.
it has many applications in their life. Then divide this into 4, 1, 2, and 3. I will fill up all the blanks with a different number. 4, 5, 7, 6. 10, 8, 12, 14. 21, 15, 12 and 18. 24, 28, 20 and 16. 20, 30, 35 and 25. 30, 24, 36, 42. 49, 35, 28, 42. 48, 56, 40 and 32. 36, 40, 63 and 45. 50, 54, 60 and 70. 54 I am rewriting. And I am giving the hint. Suppose the student choose green color for 4 table. 4 1 ja 4. 4 2 ja 8. 4 3 ja 24. So he should make like this. He should. These two problem is you just test the student is knowing tables from 0 to 10 or not. Thank you very much.